हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वे टूवर्ड्स केमिस्ट्री। आज हम सिमेट्री का डेफिनेशन और डिफाइन सिमेट्री इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह का आंसर हम लिख सकते हैं। द वर्ड सिमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड सिम एंड मेट्री। सिम मीन्स इक्वल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो सिमेट्री मीन्स टू measure together equally. If a molecule or object is said to be symmetrical, it means it can be divided into certain parts which are interchangeable with each other or indistinguishable from each other. Such objects are called symmetrical or symmetric, and the interchangeable parts are said to be equivalent to one another by symmetry or mirror image of each other. मतलब interchangeable parts are mirror image of each other and these are called equivalent. Normally symmetry of any molecule is determined from its Lewis dot structure or structure explained by VSC pair theory, hybridization or MOT, molecular orbital theory. The discussion of symmetry aspect of molecule and object is occur to indicate how symmetry could relate structure to spectra and hence physical properties. Symmetry is a quantification of beauty, said by P.W. Atkin. But for symmetric and detailed consideration of symmetry, certain mathematical tools are needed which are called symmetry element and symmetry operation. This is all about definition of symmetry और define कैसे करेंगे symmetry का। Next question. What are symmetry element and symmetry operation? Explain with example. Normally, symmetry of any molecule or object is explained by two mathematical tools, symmetry element and symmetry operation. First, symmetry element. A symmetry element is a geometrical entity such as a point, plane, a line, about which a symmetry operation is performed. Symmetry element and symmetry operation are so closely interrelated because symmetry operation is defined with respect to symmetry element, and at the same time the existence of symmetry element can be demonstrated only by showing that the appropriate symmetry operation exists. Thus, existence of symmetry element and symmetry operation is contingent with each other. Symmetry operation. The geometrical entity about which a mathematical operation is performed as such, so that after operation the molecule is indistinguishable from the original. Such a mathematical entity is called symmetry element. Whereas the mathematical operation which results the indistinguishable molecule or ion is a symmetry operation which brings the molecule into equivalent or identical configuration. The symmetry operation is also known as geometrical manipulation like rotation, reflection, inversion, etc. Hence, these are geometrically defined ways of equivalent part of molecule. H2O. H2O को 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो भी इस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो पहला कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम है। सो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद सिमिलर
और इक्विवेलेंट मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसलिए H2O है two-fold axis of rotation. Two-fold means C2 axis of symmetry. Here H2O molecule is rotated about 180 degree through an axis along oxygen atom and bisect HOH bond, and hence H2O has two-fold axis of rotation. Type of symmetry of rotation. There are 5 types of symmetry of rotation. Rotational axis of symmetry or proper axis of rotation CN, plane of symmetry sigma, improper rotational axis of symmetry SN or axis of improper rotation or alternate axis of symmetry. 4. Inversion center or center of symmetry I, identity elements. Rotational axis of symmetry or axis of symmetry. Rotational axis of symmetry is indicated by the symbol Cn. It is a line about which a molecule may be rotated so that it represents an indistinguishable configuration where n is order of axis and n is equal to 360 upon theta. Theta is minimum angle of rotation for which equivalent configuration रिटेन, और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जितना भी मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन उसको हम थीटा कहेंगे. फॉर वाटर, इफ H2O इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस अबाउट 180 degree passing through oxygen atom, then same configuration is obtained. So theta equal to 180 degree, n is equal to 360 upon 180 is equal to 2, and hence H2O has C2 axis of symmetry or C2 axis of rotation. Plane of symmetry. Plane of symmetry of a molecule or an object is explained or expressed by the symbol sigma. A molecule is said to possess a plane of symmetry when an imaginary plane passing through the molecule and divides into two parts such that one is mirror image of other is a result of reflection of the operation. H2O molecule possess plane of symmetry. मतलब a molecule is said to possess a plane of symmetry when an imaginary plane passing through the molecule and divides into two such parts which is mirror image of each other. मतलब ए molecule के थ्रू एक mirror image, एक mirror पास करेंगे जो कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा. जो भी दो इक्वल पार्ट हमको मिलेगा ना, वो दो मिरर इमेज की तरह लग रहा होगा. तो इसी केस में हम बोलेंगे द मोलिकुल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि वाटर में यदि हम एक मिरर पास करेंगे तो दो टू पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, लग रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज है. इसी के चलते वाटर पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री. मतलब जो भी वाट के बीच में पास होने के बाद हम दो इक्वल पार्ट मिल रहा है, जिससे कि लग रहा है कि दो इक्वल मतलब पार्ट मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस वाटर possess plane of symmetry. Similarly, PTCl for molecule also possess plane of symmetry. Every dsp2 square planar, मतलब एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे, इसी तरह पास करेंगे जैसे कि वो प्लेन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा मोलिकुल. यदि मोलिकुल में एक प्लेन पास कर सकते हैं जो कि टू इक्वल पार्ट में मोलिकुल को डिवाइड कर सकता है, तो हम बोलेंगे वही प्लेन के चलते वो मोलिकुल possess plane of symmetry. So every dsp2 square planar molecule possess plane of symmetry because square planar molecule are equally divided into two parts by horizontal plane.
So this is the figure for PTCl for molecule possessing plane of symmetry. Plane is horizontal plane. Plane of symmetry again are divided into three types: vertical plane of symmetry, horizontal plane of symmetry, dihedral plane of symmetry. Vertical plane of symmetry. The vertical plane of symmetry contain highest order of rotation axis and it is perpendicular to the molecule. Horizontal plane of symmetry. Horizontal plane of symmetry sigma h is the symmetry which is about a plane parallel to the molecule. Dihedral plane of symmetry. Dihedral plane of symmetry is a vertical plane that bisect the angle between two axes of symmetry. मतलब two axes of symmetry को जो भी एक वर्टिकल प्लेन बाइसेक्ट कर रहा होगा उसको हम डाइहेड्रल प्लेन कहेंगे. इम्प्रॉपर रोटेशन or alternate axis of symmetry. An improper rotation of a molecule is expressed by the symbol Sn. An n-fold improper rotation axis consists of n-fold rotation about axis by 2 pi upon n followed by the horizontal reflection. Hence is also known as rotatory reflection operation. Example: staggered conformation of ethane has improper axis of rotation और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन C6 कन्फिगुरेशन के बाद सिग्मा H लेने के बाद जो भी कन्फिगुरेशन मिलता है वो सेम टू सेम, मतलब जो कन्फिगुरेशन हम पहले से लिए थे वही वाला कन्फिगुरेशन हमको मिलता है. सो दैट स्टैगर्ड कन्फिगुरेशन ऑफ इथेन हैज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देखिए इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पहले हमको रोटेट करना है एन फोल्ड रोटेशन एंड अबाउट एन एक्सिस बाय 2 पाई अपन एन फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन. फर्स्ट एन फोल्ड रोटेशन करना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है. हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा वो यदि पहले कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेम है तो वो मॉलिक्यूल इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब वो मॉलिक्यूल में वही मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है. जैसे कि इथेन में पहले C6 करने के बाद सिग्मा H हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने के बाद हमको सेम कन्फिगुरेशन मिलता है. सो दैट स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन हैज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. उसके बाद इन्वर्सन सेंटर. इन्वर्सन सेंटर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. Inversion center of a molecule is expressed by symbol I. If a molecule has a center such that any line drawing from that point to an equal distance on one side is equivalent to equal distance on the other side. This means PTCl4 possesses center of symmetry. पीटी का इस साइड में क्लोरीन है, पीटी का इसका अपोजिट साइड में भी क्लोरीन है एंड इसका साइड में क्लोरीन अपोजिट टू दिस क्लोरीन A1 क्लोरीन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो दैट इट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली बेंजीन में इस कार्बन को अपोजिट साइड में भी एक कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन का अपोजिट साइड में भी एक कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन का अपोजिट साइड में भी एक कार्बन प्रेजेंट है. सो दैट बेंजीन ऑल्सो हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री. Identity element. It was expressed by symbol E. All molecule possess identity element. It means an operation of an identity which does not do anything in the molecule. It means an operation of identity which does not do anything. Every element possesses such type of symmetry operation. मतलब identity element present in every element. So this is all about symmetry element and symmetry operation.
or explanation of symmetry element and symmetry of ration.